जुबिन गार्ग की मृत्यु के बाद असम में कई लोगों ने ये बयान जारी किया है कि दिवाली नहीं मनाई जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम दिवाली केवल मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि अपनी सनातनी संस्कृति को जीवित रखने और असम के बरपेटा जिले के गरीब स्थानीय पटाखा उद्योग से जुड़े कारीगरों को सहारा देने के लिए मनाते हैं। हमारा उद्देश्य आनंद मनाना नहीं बल्कि उन गरीब लोगों की आजीविका बचाना है। अगर जुबिन आज जीवित होते तो शायद वे भी इन गरीब कारीगरों द्वारा बनाए गए पटाखे खरीदने की अपील करते। जुबिन हमेशा गरीबों के बारे में सोचते थे और आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, हमें उनके आदर्शों के रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, अगर हम दिवाली नहीं मनाए तो फिर असम में क्रिसमस और ईद भी नहीं मनाएंगे। हमेशा हिंदू त्योहारों की निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जब तक हमारी सरकार है, हम हर धर्म और हर त्योहार को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते रहेंगे। श्रद्धा राइज बरपेटार आतचबाजी उद्योग অসমৰ থলুৱা উদ্যোগ। দীপাৱলীৰ দিনটোলৈকে বৰপেটাৰ আতচবাজিৰ কাৰিকৰসকলে অপেক্ষা কৰে। দীপাৱলী আহিব, মানুহে আমাৰ আতচবাজি কিনিব, আতচবাজি আমি বিক্ৰী কৰিম আৰু সেয়েৰে আমি পৰিয়ালটো চলাম বছৰটো। বহুত সপোন লৈ তেওঁলোকে আতচবাজি নিৰ্মাণ কৰে। বহুত সপোন লৈ তেওঁলোকে এই থলুৱা শিল্পটোক বচাই ৰাখিছে। এইকেইদিন কোনোবাই কৈ আছে দীপাৱলীত বোমা ফুটাব নালাগে। বৰপেটাৰ আতচবাজি শিল্পীসকলে কেনেকৈ ঘৰখন গোটেই বছৰটো চলাব? তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ নাই জানো? অসমত ফাটুৱা জাৰি কৰাৰ যিটো এক প্ৰৱণতা এছাম সংগঠনে গঢ়ি তুলিছে, তেনেকে ৰাজ্যখন চলিব নোৱাৰে। মই আকৌ এবাৰ মনত কৰিম, জুবিন গাৰ্গৰ গোটেই জীৱনটোৱে আছিলে দুখীয়া জনৰ কাৰণে। মই ভাবোঁ জুবিন জীয়াই থাকিলে প্ৰথমতে জুবিনে সংগঠনসকলক ক'লেহেঁতেন যে বৰপেটাৰ আতচবাজিৰ শিল্পটোক আমি মৰিবলৈ নিদিওঁ। মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম, বৰপেটাৰ আতচবাজি শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে দীপাৱলীত আমি থলুৱা শিল্পৰ বা থলুৱা আতচবাজি কাৰিকৰৰ পৰা কিনা বোমা আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিম।